parameters. Further, now we can also resolve this resultant stress in two ways. One is in the Cartesian coordinate directions, and other is in normal direction. This is the normal direction, and this is the shear direction. Yeah, yes, Akash. Hello, sir. Yes, yes. If it's okay with you, sir, can you at least enable chat box that would be delivered to your private message just in case if I wanted to Yeah, ask you something? yeah, yes, definitely I'll do that. This way I will not be able to communicate any problem. Yes, it is done now. Okay. Thank you, sir. But it is with host only. You can do that. Yes, sir. That's what I was. I have started the recording. Okay, so we can resolve the resultant stress vector in two ways, and this is the normal stress in the nth direction. Okay, normal stress whose in a direction whose direction cosines are nx, ny, and nz, right? And same way we can evaluate the shear stress by using this relation. Now there are few questions which arise. Okay, these are like, are there any planes which passes through the given point on which the resultant stresses are wholly normal? Because we know that there are critical planes. There are critical planes on which if the resultant stress is completely normal and they are free from any shear, and these planes are called principal planes. So अगर कोई ऐसी situation बनती है कि resultant stress पास किसी पॉइंट से कोई प्लेन पास कर रहा है और उस प्लेन पर रिजल्टेंट स्ट्रेसेस जो है वो कंप्लीटली नॉर्मल है, सो दैट विल बी वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू आंसर. अदर इज, what is the plane on which normal stress is maximum? Okay, so if the normal stress is maximum, and what is its magnitude, like principal stresses and principal plane? What is the plane on which tangential or shear stress is maximum? Like what will be the plane of maximum shear, or is maximum shear stress का magnitude क्या होगा? So we will, in today's lecture, we will try to answer these couple of questions, and they will basically point us towards principal stresses and principal. Okay. So what we can do here is, sorry, I think I am audible now. There was a bit disturbance. So let us say we have a plane n whose direction cosines are nx, ny, and nz, on which the stress is wholly normal. So we assumed in principle that nx, ny, nz are the direction cosines of normal to the plane on which stress is wholly normal. And let us say that if sigma is the magnitude of this stress vector, then one can call it as Txn is equal to sigma nx, Tyn is equal to sigma yn, and Tzn is equal to sigma nz. Okay, so let us say that if sigma is the principal stress, and magnitude of this stress vector, and the components of the stress along x, y, and z direction are sigma nx, sigma ny, sigma nz. This we directly get from Cauchy's relation, which we have done already, because the Cauchy's relation states that Txn is equal to nx sigma x
हाँ, I saw many of the messages कि sound नहीं आ रही, but I think it is okay now. So sigma x nx plus ny tau xy plus nz tau xz. Since we assumed that nx, ny, nz correspond to only, since we assume that they correspond to only principal plane, that means tau xy is 0, tau xz is 0. So one get tx is equal to sigma into nx, and we assume that sigma x, sigma y, sigma z is equal to sigma. ठीक है, क्योंकि ये wholly normal stress है, right? So in that case, what we can do is we can see on any arbitrary plane. So these are the state of stress with reference to the plane on which the stress is wholly normal. ये जो तीन इक्वेशन यहाँ पर लिखी हैं, ये है जहां पर completely normal stress है, and this is on any arbitrary plane. This is any arbitrary plane, right? So अगर हमारा कोई भी arbitrary plane principal plane हो रहा है, any arbitrary plane is referring to the principal plane, that means this equation must be equal to this. तो क्योंकि left hand side equal है, one can write like this, or before this one can write like this, that nx sigma x plus ny sigma tau xy or tau yx plus nz tau zx is equal to sigma times nx, right? Only the first of this equation. ठीक है, और अगर इसको दोबारा देखें, क्योंकि nx and nx are here, I can write sigma x minus sigma multiplied by nx plus tau xy or tau yx ny plus tau zx and z equal to 0. So we get the first of this equation. If I compare txn on any arbitrary plane with txn on a principal plane, then we can state this, right? So same way we can do this for second equation as well as third equation. So one gets three different equation. Okay, और अगर हम ध्यान दें, ये बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, तीन इक्वेशन है, हम तीन अननोन निकाल सकते हैं, इट इज जनरली सेट, लेकिन कीप इन माइंड दीज आर होमोजीनियस इक्वेशन, कि तीनों ही इक्वल टू 0 आ रहा है. सो दैट मीन्स कि तीनों जो यूनिक सॉल्यूशन आएगा उसका मतलब है कि nx इक्वल टू ny इक्वल टू nz इक्वल टू 0 आ जाएगा. दिस इज ए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, सॉरी दिस इज ए ट्रिवियल सॉल्यूशन. और ये पॉसिबल भी नहीं है. This is not possible because we know that nx square plus ny square plus nz square is equal to 1. Right? Therefore, what we have to do is, हमें पता है कि ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है. इन तीनों इक्वेशंस को यूज करेंगे एंड वी विल फॉर्मुलेट ए आर्गन वैल्यू प्रॉब्लम. अगर आपको मैट्रिक्स मेथड्स ध्यान हो मैथमेटिक्स के, so you frame a characteristic equation, right? So after this we obtain a eigenvalue problem and hence we can solve it for non-trivial solution. Trivial solution जो है nx ny nz equal to 0, ये एक mathematical solution हो सकता है, but physically this is not possible because direction cosines are never, all the direction cosines can never be 0, right? So let us see how we solve this. So we already have these three equations which are homogeneous in nature. Okay, now can we write this in matrix form rather than using this in terms of three equations? इस कोर्स में मैट्रिक्स मेथड्स को हम आसानी से समझ सकते हैं एंड वी विल स्टिक टू 3x3 मैट्रिक्स. सो 3x3 मैट्रिक्स का आपको डिटर्मिनेंट निकालना आना चाहिए, इनवर्स निकालना आना चाहिए. सो प्लीज सी टू दैट वी ऑल आर अवेयर विद those things. So can I write, please see that, can we write these three equation in terms of this matrix form, that is sigma x minus sigma tau yx tau zx. So this is a 3x3 matrix and another vector 3x1. आप यहां पर ध्यान दे सकते हो कि जो मैंने 3x3 मैट्रिक्स ड्रॉ की है, that is drawn using the square bracket. ओके, अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट में लिख रहा हूं कोई भी क्वांटिटी, दैट मींस इट इज ए मैट्रिक्स.
और कोई कर्ली ब्रैकेट्स में या जो पैरेंथेसिस है इसमें लिख रहे हैं हम, देन दे आर it is a vector, it is a one dimensional. Matrix is a two dimensional because it is going in column wise, going in row wise as well as column wise. And however, vector is a one dimensional, it is nx, ny, nz. It is only represented in column. Now to get the its unique solution, what we have to do is, in order to obtain its non-trivial solution, we set its determinant equal to 0. तो जैसे ही हम determinant equal to 0 रखेंगे, now in this equation, kindly keep in mind that sigma x, tau xy, tau xz, tau xy, sigma y, tau yz, tau xz, tau yz, and sigma z. These are all rectangular stress components and they are known to us. Okay, अगर मान लो कि हमें प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालनी है तो हमें पता रहेगा कि एक आर्बिट्रेरी पॉइंट, उस पॉइंट पर स्ट्रेस कितनी है इन एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स. ठीक है, सिग्मा इज अवर अननोन, सो दिस इज माय अननोन सिग्मा व्हिच इज नथिंग बट प्रिंसिपल स्ट्रेस. तो इसको निकालने के लिए हमने इसका डिटरमिनेंट 0 कर दिया. अब इसका अगर हम डिटरमिनेंट सॉल्व करें, आई विल टेल यू द प्रोसेस, वी विल रिकॉल द प्रोसेस लिटिल लेटर कि डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं. लेट अस, इट विल बी ए क्यूबिक इक्वेशन. ठीक है, एक क्यूबिक इक्वेशन आ जाएगी विच इज सिग्मा क्यूब माइनस सिग्मा समथिंग सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड इंटू सिग्मा स्क्वायर प्लस दिस क्वांटिटी इंटू सिग्मा एंड माइनस दिस टर्म विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ सिग्मा. ठीक है, तो ये एक क्यूबिक इक्वेशन आ जाएगी. तो अगर एक क्यूबिक इक्वेशन आएगी और इट इज इक्वल टू 0, हाउ मेनी वैल्यूज फॉर सिग्मा वी विल गेट? वी विल गेट three roots of this equation. We will get 3 roots. This is called cubic equation. This is called cubic equation, and we get 3 roots. And if the rectangular state of stress is feasible, practically feasible, then these 3 roots will be real roots. They will not be complex. They will always be real roots. ठीक है, तो after solving these 3 rules, once we obtain these 3 roots will be termed as principal stresses. हम उसको descending order में arrange कर देंगे, sigma 1, sigma 2, sigma 3, maybe equality sign also we can put. So we will arrange this in descending order. First is called major principal stress and sigma 3 is called minor principal stress, right? So please see to it कि हम प्रिंसिपल स्ट्रेस निकाल पा रहे हैं. सो प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालने का बड़ा आसान ढंग है. इट इज, यू डोंट हैव टू रिमेंबर एनी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन नाउ like you used to do in solid structure ki sigma x cos square theta sin square theta and so on. We can simply arrange a matrix form, get its determinant and solve the cubic equation using calculator, or आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हो या आप एनालिटिकली सॉल्व करना चाहो वो उससे भी सॉल्व कर सकते हो. Okay, so the roots of these equations are nothing but principal stresses. ठीक है, तो हमारे 2 टास्क हैं इसमें. एक बार तो हमें प्रिंसिपल स्ट्रेसेस निकालनी है, दूसरा टास्क ये है कि हमें प्रिंसिपल प्लेन्स निकालने हैं. ओके, सो टू गेट द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आई थिंक दिस इज फाइन, बट टू evaluate the principal planes, let us see what we do. I will take up the doubts after this slide only. Okay, so what we do for we have summarized this here. The 3 roots of the cubic equation are designated as sigma 1, sigma 2 and sigma 3. All the 3 roots are real in nature. They are real, and sigma 1, sigma 2, sigma 3 are the roots and the principal stresses. Now how to obtain the principal planes? We substitute any one of these 3 solution. For example, क्योंकि 3 प्रिंसिपल स्ट्रेस हैं तो हर एक प्रिंसिपल स्ट्रेस के कोरस्पॉन्डिंग एक प्रिंसिपल प्लेन होगा. So there will be a principal plane corresponding to sigma 1, there will be a principal plane corresponding to sigma 2, and there will be a principal plane corresponding to sigma 3, right? So let us say I want to evaluate the principal plane corresponding to sigma 1. तो जो भी sigma की value है, I will, let me go back to the slide, I will put in this equation. Okay, we will put the value of sigma here.
यानी कि अगर मैं सिग्मा सब्स्टिट्यूट कर दूं, जो सिग्मा 1 आया है, already rectangular stress components are known to me. That means I know this 3x3 matrix. Okay, and nx, ny, nz. तो nx, ny, nz unknown है. इन तीनों में से कोई भी दो इक्वेशंस यूज करें और तीसरी इक्वेशन अगर ये यूज करें nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर इक्वल टू 1, we will get the value of nx, ny and nz. ओके, तो ये वैल्यूज हमें मिल जाएगी. Let us see how we solve them. So substitute any of these three solution in characteristic equation, we can solve for corresponding nx, ny and nz. Okay, and in order to avoid the trivial solution, because क्योंकि डायरेक्टली अगर सोल्व करें तो हमें मिल जाएगा कि nx, ny, nz इक्वल टू 0. Okay, but we don't want that. So therefore we will use this equation, that is nx square plus ny square plus nz square equal to 1. Hence with each sigma there will be an associated plane. The same process you will repeat with sigma 1, sigma 2 and sigma 3. The planes on which the stress vector is wholly normal, we have already defined this, are called principal stresses. Sorry, the principal planes or shearless planes. And the corresponding stresses are called principal stresses. Okay, any doubts so far? We can answer to them before we see a numerical on this. Anyone has the doubts? Please raise the hand. Okay, what we generally see is, मैं लास्ट स्लाइड में दोबारा जाता हूं. कुछ लोग कहते हैं कि या तो हम ये डिटर्मिनेंट यूज करें, or else we remember this cubic equation. No need to remember this equation, please. Remember the determinant. इसको determinant में रखो और determinant से, because if once you have the data, because sigma x, tau x, y, tau x, z, all these stresses will be numerical values. So once you have the numerical values, it is very easy to solve the equation, obtain the equation rather than remembering this. So you need not remember this. ठीक है, लेकिन एक और ढंग है जैसे हम याद भी रख सकते हैं. So let us come to that. Okay, so now the cubic equation what we have here is, first of all here these are the, one can define this in terms of strain invariants. Okay, sorry, stress invariants. So stress invariant, सबसे पहले अगर हम इसको define करें कि क्या होता है, what is the dictionary meaning of invariant suggests that invariant is something which does not change. Okay, right? So यहाँ पर अगर हम cubic equation को दोबारा देखें, so this is sigma x plus sigma y plus sigma z. Okay, this is called first stress invariant. So we can express this whole equation, इस क्यूबिक इक्वेशन को हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, सिग्मा क्यूब माइनस I1, दिस इज I1, I2, I3. These are nothing but the stress invariants. I1 is this quantity, sum of all three normal stresses. I2 is this quantity and I3 is this quantity. Again, you don't have to remember this. Okay, we will define what are these. So I1 is sigma x plus sigma y plus sigma z. So this is nothing but, it is easy to, you can say, remember, or because I know that what we will be given with stress tensor, sigma x, tau xy, tau zx, tau xy, since this will be symmetric now, sigma y, tau yz, tau zx, tau yz, sigma z. तो ये चीज हमें गिवन होगी in most cases. So we know the rectangular state of stress. So sum of principal diagonals, this term is called principal diagonal. Okay, ये जो जहां sigma x, sigma y, sigma z represent कर रहा है, this is called principal diagonal. The sum of principal diagonal terms is called I1. ठीक है, तो so you can easily evaluate that.
I2 is, if you recall the term cofactor, अगर हम मैट्रिक्स मेथड्स में जाएं तो there is a term cofactor. Okay, so I2 is nothing but it is sum of cofactor of diagonal terms. यानी कि for example if we see what will be cofactor of sigma x, sigma x का cofactor क्या होगा? Sigma y, tau yz, tau yz, sigma z. What will be cofactor of sigma y? You can do this. Okay, so sigma x, tau x z, tau zx or xz, whatever you write, tau zx, sigma z. And what will be cofactor of sigma z? You don't consider this, don't consider this. So you will be left with sigma x, tau xy, tau xy, sigma y. So same thing we have written here. So इसको अगर हम solve करें तो हमारे पास यही आएगा. You can check at your end. Okay. The cofactor of this is now sigma x, sigma y minus 2xy square. Right. So once you do that, we can evaluate I2. I2 is nothing but stress invariant of type 2 or second stress invariant. Okay. What is third stress invariant? It is nothing but this term, but again, no need to remember this. It is nothing but determinant of the given resultant stress vectors. जो starting में चीज दी हुई है हमें, which I am telling that it will be known to us in many cases. So if we evaluate its determinant, we get I3. Okay, so these are called stress invariants. Why invariants? Because these values will not change as the plane changes. Now there is a slight discussion here. हमने पहले कहा है कि जैसे जैसे plane change होता जाएगा, sigma x change होगा, sigma y change होगा, sigma z change होगा, right? But now what we are telling that yes, as the plane is changing because of change in the direction cosines or because of arbitrary orientation, there will be a change in the stress or resultant stress. ठीक है? But there will not be change in I1, I2, I3. ठीक है? Please remember this. And I1 is nothing but the sum of the diagonal terms. I2 is nothing but sum of the cofactors of diagonal terms. And I3 is nothing but determinant of resultant state of stress. Okay? And the cubic equation, now instead of remembering this cubic equation, you can simply remember sigma cube minus I1 sigma square plus I2 sigma minus I3 equal to 0. तो दो ढंग देखता हूं मैं जो स्टूडेंट्स भी प्रेफर करते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस को इवैल्यूएट करने के लिए. आई विल सजेस्ट अगर सिर्फ प्रिंसिपल स्ट्रेस पूछा गया है देन रेफर टू दिस इक्वेशन डायरेक्टली, नो नीड टू गो इनटू एनी मैट्रिक्स फॉर्म और समथिंग. लेकिन अगर प्रिंसिपल प्लेन पूछा गया है तब हमें जो मैट्रिक्स फॉर्म में हमने इक्वेशन शो की है लास्ट स्लाइड में उससे रेफर करना पड़ेगा. The terms I1, I2, I3 are called first, second and third stress invariants respectively, and invariant is one whose value does not change when the frame of reference is changed. Okay, and this is a good point. अगर stress invariant नहीं भी मान लो पूछा नहीं भी जाता है आपसे कि stress invariant satisfy कर रहा है या नहीं कर रहा है, it is I think a good habit. अगर I think it is a very important topic, आपको भी पता होगा, solid structure में भी हमने देखा है, and yes you have all done the course of machine design. तो आपने देखा है कि principal stress जो है they are very very important for design. So one will always look for principal stresses or critical stresses. ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि क्या हमने जो stresses निकल के आई हैं वो सही भी हैं या नहीं है. वो कैसे पता चलेगा? We can check for invariancy. अगर invariant, because the invariance must also satisfy at the principal plane. Okay, we will take one simple example here before going further. अब तक कोई doubts हैं तो please ask me now. Sorry. So any doubts? You may raise your hands.
त्र्यंबक, यस सर ये जो अभी आपने इक्वेशन दिखाई हुई है, मैट्रिक्स दिखाया हुआ है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाला, हाँ इसको हमने, इसका डिटरमिनेंट था जो, उसको हमने कन्वर्ट किया ना वो आइगन वैल्यूज लेकर अलग अलग। राइट, यस। मैं एक बार और समराइज कर रहा हूं न्यूमेरिकल करने से पहले। एक बार न्यूमेरिकल करेंगे तो आई थिंक मैट्रिक्स को कैसे हैंडल करना है वो हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो व्हाट वी डू हियर इज, जैसे सबसे पहला स्टेप ये हो सकता है कि अगर हमें प्रिंसिपल स्ट्रेसेस निकालनी है तो हम इस मैट्रिक्स फॉर्म में अरेंज करें और इसका डिटरमिनेंट निकालें तो एक क्यूबिक इक्वेशन आ जाएगी। यहां से हमें प्रिंसिपल स्ट्रेसेस मिलेंगी। इन प्रिंसिपल स्ट्रेसेस को वी पुट इट हियर and obtain the value of nx, ny and z after using the condition that nx square plus ny square plus nz square equal to 1. Okay, तो ये वाली इक्वेशन के बाद, now again the same slide we have here. Let us see a simple numerical. Please see this very carefully. ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है as far as exam points are concerned, as far as your design is concerned, क्योंकि बिना principal stresses के आप डिजाइन में आगे नहीं बढ़ सकते, you know that. So the state of stress at a given point is given as follows. ठीक है, तो ये state of stress दी हुई है, यहाँ tau i z दिया हुआ है, हो सकता है sigma i z भी दिया जाए आपको, तो because the stress is also represented by sigma और tau, that does not mean कि ये सारी shear है या term है। आप देख सकते हो कि the state of stress is nothing but symmetric, इसका मतलब है कि ये सही है। अगर ये सिमेट्रिक ना हो तो ये गिवन स्टेट ऑफ स्ट्रेस इटसेल्फ इज रॉन्ग। ठीक है, सो डिटरमाइन द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, और क्योंकि मैं यहाँ पर न्यूमेरिकल कर रहा हूं, सो वी आर स्टिकिंग टू ओनली डायरेक्शन ऑफ मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। ठीक है, बिकॉज द प्रोसेस विल रिमेन सेम फॉर अदर प्रिंसिपल प्लेन एज वेल। आल्सो चेक फॉर इनवेरिएंसी ऑफ I1, I2 and I3. So let us see how we proceed. So what we do here is we evaluate, क्योंकि हमें प्रिंसिपल प्लेन हमें इवेल्युएट करना है सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 और सिग्मा 3 के कोरस्पॉन्डिंग जो nx3, ny3, nz3, तो ये सब चीजें हमें इवेल्युएट करनी है, राइट। सो लेट अस सी हाउ वी प्रोसीड। सॉरी, सो we put it in a matrix form. ठीक है, हम मान लेते हैं कि सिग्मा एक प्रिंसिपल स्ट्रेस है, तो 1 माइनस सिग्मा 2 1 2 1 1 1 1 1, sorry 1 minus sigma 1 minus sigma, so this will be a equal to 0. ठीक है, एक ढंग ये हो सकता है और मैं इसकी क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व करूं। दूसरा ढंग क्या हो सकता है, I write in the form of I1 sigma cube minus I1 sigma square plus I2 sigma minus I3 equal to 0. ठीक है, तो what we do here is, sorry मैं यहाँ पर nx, ny, nz लिखना भूल गया, so this will be nx, ny, nz equal to 0. This is a matrix. Okay, तो हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस जो निकाल लेते हैं, यहाँ ये निकाल सकते हैं, राइट। एंड what will be I1? I1 is nothing but sum of the diagonal terms. That means 1 plus 1 plus 1, which is equal to 3. I2 is nothing but sum of the cofactors. So I can easily write it as 1 2 2 1 plus 2 1 1 1 plus, I think you can follow me, and पहले वाला z का था, दूसरे वाला x का था, y का होगा 1 2 1 1. These are nothing but the cofactors. शायद मैंने ऑर्डर अलग अलग ले लिया है. This is the cofactor for z. This is the cofactor for y. Sorry, this is the cofactor for x. I mean इसके corresponding, and third one जो है वो center के corresponding है. Okay, and it will come out to be 1 minus 4
प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 2, क्या आ गया ये? 1 minus 4 is minus 3, minus 3 plus 2 is minus 1, minus 1 minus 1 is minus 2, minus 2 plus 1 is minus 1, it will be minus 3. Okay, I think I2 we can repeat again. I2 is nothing but sum of the cofactors of diagonal terms. So diagonal terms, I will rub this part and do it again. So diagonal terms means sigma इस 1 के corresponding. जब मैं इस 1 के corresponding देख रहा हूं तो I will not take this column, first column, and I will not take first row. जो बाकी बचा हुआ पोर्शन है वो हम एज इट इज लिख देंगे. सो इट इज 1 1 1 1, राइट? सेम वे व्हेन आई टेक द सेकंड राइट corresponding to the second element of principal diagonal, that means I will not take into consideration second row and second column. So again it will be 1 1 1 1. I think पहले हमने लिख भी गलत दिया था. 1 1, yes. And now when I write corresponding to the third term, I will not consider third row, I will not consider third column. So that means we write 1 2 2 1. I hope that makes sense now. So this is 1 minus 1 is 0. So for this also 1 minus 1 is 0. So for this is 1 minus 4, that is minus 3. So sigma I2 जो आ गया हमारा -3 आ गया. ओके, तो जैसे ही I2 आपका -3 आया है, I1 we already obtained. I3 is nothing but determinant. I hope you all know how to evaluate the determinant, लेकिन फिर भी मैं यहाँ सोल्व कर रहा हूँ. 1 into 1 minus 1. Okay, minus 2 into 2 minus 1 plus 1 into 2 minus 1. Please see if you can follow me to evaluate the determinant. अगर नहीं है तो प्लीज किसी मैथमेटिक्स की बुक को रेफर करो कि डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है एक 3x3 मैट्रिक्स का, राइट? ऑब्वियसली यू कैन यूज मेक यूज ऑफ कैलकुलेटर्स एज वेल, लेकिन आपको मैनुअल इवेल्युएट करना आना चाहिए. ओके, 3x3 मैट्रिक्स के मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूं, आपको क्या आना चाहिए? मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सो दैट इज फाइन. यू नीड टू इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट, और आपको ये पता होना चाहिए कि इनवर्स कैसे निकालना है, उसकी भी कई बार जरूरत पड़ जाती है. Sanchit, okay, you have doubts in I2. Okay, that is fine. We will clear it again. I2 में मैं आज तो यही, I'm not repeating the whole process, लेकिन कल in our next class we will take one more problem, so it will be clear, more clear. लेकिन I2 is nothing but sum of cofactors. I2 is nothing but sum of cofactors of diagonal terms. Cofactors of diagonal terms. Okay, so if I start repeating here, we will not be able to complete this exercise. So I want कि हम कम से कम principal stresses निकाल लें. So in next class we will take another problem, right? So determinant को निकालने के लिए 1 minus 1 is 0, minus 2 plus 1. So it will be minus 1 will be the determinant. So with this, we can see that one can evaluate stress invariants, that is I1, I2 and I3, right? जैसे ही हम ये equations निकाल लेते हैं, stress invariants निकाल लेते हैं, we can get the cubic equation, right? And the cubic equation is coming out to be, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन हमारे पास ये है, सिग्मा 1 सिग्मा क्यूब माइनस I1
sigma square plus I2 sigma minus I3, यही है. And I1, I2, I3 are I1 is equal to 3, I2 is also 3 and I3 is 1. यही थे हमारे पास. Or let us check in the previous slide. Minus 3 and minus 1. Okay, so this is minus 3 and minus 1. So one can write the equation as sigma cube minus 3 sigma square minus 3 sigma plus 1 equal to 0. अब ये क्यूबिक इक्वेशन है, right? Now once अगर हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन आती है तो there will be 3 roots, right? तो 3 रूट को निकालने के लिए what you can do is hit and trial से भी एक रूट निकाल सकते हो, or you can directly make use of your calculators. ठीक है? And let me check whether we are correct or not. Yes, we are fine. Okay, yes, it is fine. So one can evaluate using the minus 1 is a root, yes. So that is by hit and trial you can obtain, और जैसे ही एक रूट आ जाता है we can divide it and get the quadratic equation. Okay, तो वहां से हमें पता चल जाएगा. Or else you should know that how to evaluate the roots of a cubic equation using calculators. तो sigma minus 1 एक रूट है, मैं directly roots लिख रहा हूँ. Sigma 1 is equal to minus 1, sigma 2 is equal to let us not write 1, 2, 3 and so on. One of the root is minus 1, other root is 2 plus root 3 and the third root is 2 minus root 3. 3.732. Yes, Ashutosh, thank you. I am getting the answers and they appear right. I have the answers in 2, I think 2 plus root 3 and 2 minus root 3. That will solve the purpose. Okay? So they are right. So once we get these 3 roots, we know that we can arrange them in descending order. So 2 plus root 3, 2 minus root 3 and minus 1. So this is my sigma 1, this is my sigma 2, this is my sigma 3. Okay. Now what हम प्लेन कल in our next lecture में हम जाते हैं कि प्रिंसिपल प्लेन कैसे निकालेंगे. टुडे वी विल स्टॉप हियर, लेकिन एक बार चेक करते हैं हम कि हमारा आंसर सही है या नहीं. व्हाट वाज I1? I1 वाज 3. बट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ I1? If the sum of the normal stresses must be equal to the stress invariant one, that is I1. यानी कि अगर प्रिंसिपल प्लेन है तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 क्या हुआ? दिस इज ऑल्सो बट नथिंग बट I1. ठीक है, ये क्या हो जाएगा? If you see 2 plus 2 minus root 3 plus root 3 will cancel out. This is also 3. That means invariance is fine. Yes, next class का time हो गया है. I am getting the responses and what we will do, we will stop here and we will continue in next class. और अगली क्लास में हम देखेंगे कि प्रिंसिपल प्लेन कैसे करने हैं. मैं ऐसा करूंगा कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आपको पुट कर देता हूं वीडियो में एंड वी विल टेक another example rather than continuing with the same example. Okay, so thank you very much. We will stop here. We will see the principal planes in next class. किसी को कुछ डाउट्स लिखने हो अभी चैट में लिख सकते हैं. सांजदीप, वीडियो कब और कहाँ मिलेंगी? वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ. Please upload tutorials. Okay, I will upload the tutorials on LMS. Okay, और वीडियोस भी मैं LMS पर ही अपलोड कर रहा हूँ. Yes. आगे I1 ये ऐसे निकाला, I2